Hello guys and welcome back to Krisha's Corner. Today I'm finally showing you all my daily routine because some of you requested it, so here it is. My routine is honestly very morning focused because that's the time when I feel the most productive and motivated and fresh. Okay, from slow mornings, my mornings are not slow, but from slow mornings to getting things done, this vlog is basically a little glimpse into my everyday life. So grab a snack, get comfortable and spend the day with me. Hello guys, good morning. It is 6:15 right now and I have just gotten up. You can see and tell it from my face itself. I've gotten up from my daily 10k steps to complete that walk, run, whatever, and I will take you along with me for whatever I do in the morning before I go to my run. So the first step right now is to go grab one glass of lukewarm water and yes, just come along with me. Done with my water and going up again to brush my teeth, wash my face and change my clothes. I look so bad right now. This is my outfit and I quickly get into this. That's super quick. Get ready with me. कुछ गलती ही नहीं है actually. So except one thing. This is literally non-negotiable for me. Very simple. I came out of my home bottle. सुबह कोई खाया मैं क्या करती हूँ, I cannot just keep on running with the no. So अपने डिग्गी में रख देती हूँ. So every time I want to drink water, I come back here, drink my water, keep it back in my diggy. I'm a pro guys, I know everything. So let's go. Took some almonds, gin ke saath, and I ate it during my walk only. मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं 10,000 लोगों के सामने ही कैमरा खोल के बात करूँ. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग हियर एंड देयर, बट ठीक है, आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल. ओह, आई स्पॉटेड ब्लू अगेन. इफ यू नो कॉन्टेक्स्ट मिस्टेक आई मेड, आई फॉरगॉट माय एयर डॉग्स. आई मीन हाउ कैन आई, मैं भूल गई. अब ये विदाउट म्यूजिक आई हैव टू कीप ऑन वॉकिंग, रनिंग, व्हाटएवर. वाओ, यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड टू मी. ओके, मैं यहाँ कहीं भी चलती हूँ, अभी ऐसे गई वैसे गई ऐसे गई. तो अभी मैं चल रही थी तो बाजू में ऑफकोर्स रोड है, तो वहाँ से सम पीपल वर पासिंग एंड दे वर शाउटिंग एंड मैं ध्यान नहीं था. तो आई गॉट केयरफुली, देयर वाज दिस कपल जो मेरे आगे से आया था एंड देन दे गिव मी अ कंफर्टिंग, वेरी कंफर्टिंग स्माइल. आई गिव इट बैक टू देम. फिर मैं वापस दूसरी बार चल रही, वो वापस मेरे सामने से
एंड वापस में तीसरी जगह चल गई तो मेरे सामने से है। एंड फाइनली द लेडी शी आस्क्ड मी कि कितनी देर चलते हो बेटा? तो बस लाइक मैं चलती हूँ 1 घंटे तक चलती रहती हूँ। तो बोलते 1 घंटा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कितनी देर चलते हो? तो शी वाज लाइक वी वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स। एंड अंकल लाइक कि आई एम 70+ ज्येष्ठ नागरिक हूँ मैं। तो वी वॉक 2 किलोमीटर्स एंड घर पे जाके हम वी टू सम पीटी जो स्कूल में सिखाया था। ग्रेट अंकल बोलते भी अच्छा अच्छा करते रहो करते रहो। आई वाज सो हैप्पी क्योंकि वाह यार, आई मीन this part of the society is so pretty and I just love that part of the society. There's one part that is so cruel and this one part is angelic. So yeah, that just made my day. It's so pretty that it literally made my day. I'm smiling while I'm walking. I'm like चलो और 10-20 किलोमीटर चल लूँगी आज तो मैं इतनी खुश हो गई मैं. That just made my day यार. Oh, I love that part of the society. Back home. Done. 55 minutes. Smart. Now it's time to do some meditation. I don't know कि मैं फ़ोन कहाँ प्लेस करूँगी यहाँ पे, but it's okay, I'll try and figure. This is my mat and let's go. Now then checking after wearing all of this. And this, I'm just gonna my hair getting ready for the Monday. This hair of mine is golden white. Can you see it? No, it's not white, it's golden. It's different. It's very pretty. Actually don't go to taking my phone. So I won't be able to show you that. But I'm just going and coming back in 15 minutes. This is my rumal of Pooja. If you know, you know. Changed into my comfy clothes and now this is the outfit of my day. मतलब जो मैं घर पे डालूंगी. अभी I have a lot of stuff to fold, keep in place. So exactly that's what I do at this time. Done. Checking in after a lot of time. I think the last clip you saw was me making a tortilla. Yes, I know how to make it and I'm super proud about that.
But I'm really sorry, I forgot to record my breakfast. I forgot to record my lunch because I'm not very used to using my phone, to capture things outside the room because my family don't know I'm doing YouTube. So हर चीज़ हर जगह मोबाइल इतना इट्स डिफिकल्ट बट मैं एक्चुअली भूल गया आई डोंट नो व्हाई मैंने ये तो बाकी रिकॉर्ड कर लिया बट आई जस्ट फॉरगॉट माय लंच माय ब्रेकफास्ट इट्स ओके आई ट्राई टू रिकॉर्ड माय डिनर अगर बहुत लोग रहते तो इट बिकम्स डिफिकल्ट स्पेशली द मेल्स ऑफ द फैमिली कि आई जस्ट आई डोंट हैव द टच फॉर दैट बट ठीक है अभी इट इज 3:30 एंड आई एम थिंकिंग ऑफ रीडिंग बट आई थिंक दिस टाइम पे देयर इज नो स्पेसिफिक टास्क जो मैं हमेशा करती ही हूँ कि इस टाइम पे यही करेंगे नो दैट डजंट हैपन मैं मे बी यहाँ पे एडिटिंग करती हूँ उस टाइम पे या मे बी आई जस्ट scroll my phone or just lay down and take a nap of 15-20 minutes. तो ये सब मेरा हो गया एक्चुअली मैंने स्क्रॉल कर दिया है नैप में लिया नहीं स्क्रॉल ही किया है बस तो देन आई वाज लाइक शिट आई नीड टू रीड इट तो मतलब मैं कुछ तो करना चाहती थी कुछ तो प्रोडक्टिव नॉट माय फोन बिकॉज माय स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बिकॉज एडिटिंग की वजह से my screen time boosts like what and what not. So I've thought कि मैं भी read करूँगी and you will have to see me read. And okay, the current book I'm reading is this. It is A Touch of Eternity by Durjoy Datta. He is one of the famous authors and this is the first book जो मैं उसकी उनकी पढ़ रही हूँ वरना my favorite author is Sudeep Nagarkar. रविंदर सिंह भी अच्छे हैं but I am reading this and I've been meaning to read a Durjoy Datta book for the longest time. So here it is. So I am traveling this week, so I need both of these dresses to be altered. ये loose है. So that's exactly what I'm doing right now. So this is the quick before. This is the quick after. What do you think? I think it looks pretty nice. थोड़ा मैंने तभी obviously lose रखा है because I don't know if ये shrink इतना हुआ फिर वो all ये हो जाएगा. That's why I've kept it like this. थोड़ा loose कम होगा. And थोड़ा loose in my sleeves. बाकी मैं नहीं ज़्यादा this is my second dress, and you can tell कि बहुत ज़्यादा बड़ी है. This is how it looks after. Okay, I like it. I am almost done with my day, and it is 10 right now, and I sleep at 11 no matter what. I go to my bed at 11. I don't care क्या हो रहा है कुछ हो रहा है. I go to bed at 11. I just got back from a fresh cold shower. And I feel very fresh right now. Actually, I'm done with everything. मैंने वीडियो भी चीज़ बंद कर दिया था because my parents came over. Okay. And with that, we come towards the end of today's video. I really hope you guys enjoyed watching my daily routine. Do keep suggesting what else you would like to see on this channel because I genuinely love reading your ideas and making content you all enjoy. Also, don't forget to like, comment, share and subscribe because your one like, one subscribe can mean so much to this Chotusu channel. And I will see you in the next one. Till then, keep smiling and Vasilando.